Good morning students, I am your Shaista teacher. I welcome you all in our today's mathematics learning session. Students, previous class we finished mathematics part 2 chapter number 1 basic concept in geometry. Today I am going to start new chapter, that is chapter number 2 parallel line. So let's learn parallel line in detail. Students, in mathematics you have studied various types of lines such as parallel line, perpendicular line, transversal line, intersection line and so on. Here we are going to discuss one of the type of line are known as parallel line. So let's learn what is parallel line. Students, before starting parallel line chapter, here first I am going to teach you what is line. Okay, so first understand what is line. I know you are knowing that what is line means a line is a straight line. Okay, so but हम इसको डीपली देखते हैं. तो देखो यहाँ पर मैंने एक प्रोटेक्टर रखा. अब ये प्रोटेक्टर की हेल्प से मैंने एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया. ठीक है, अब ये 90 डिग्री एंगल जो है ये लाइन से काफी दूर है, एग्जैक्टली 90 डिग्री का मेजर है. बट अगर व्हाट इफ अगर मैंने इसका मेजरमेंट कम किया, ठीक है, अभी देखो ये एक्यूट एंगल की पोजीशन है. ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये रेड लाइन आपको क्या दिख रही है, ब्लैक लाइन से थोड़ी कम है. 45 डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया. अब रेड लाइन ब्लैक लाइन के करीब दिख रही है, आपको नियर बाय दिख रही है. ठीक है, अभी धीरे धीरे करके ये है ना, अभी हम उस एंगल को और रिड्यूस करेंगे. ठीक है, सो नाउ इफ अगेन आई कीप हियर प्रोटेक्टर और फिर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ 15 डिग्री का एंगल. अब देखो अब काफी करीब आ गई है ये रेड लाइन ब्लैक लाइन के. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, एंगल रिड्यूस होते जा रहा है और वो ब्लैक कलर की जो लाइन है स्ट्रेट लाइन उसके करीब आ रहा है. मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर 0 डिग्री का एंगल लेते हैं तो कितना होगा. ठीक है, तो अगर 0 डिग्री का लेते हैं तो ये स्ट्रेट सीधी लाइन जाएंगी. देखो ये रेड लाइन सीधे ब्लैक लाइन के ऊपर है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, अ लाइन कैन बी अ 0 डिग्री एंगल. ओके, अ लाइन कैन बी अ 0 एंगल. इज दैट क्लियर. तो ये क्या है, 0 डिग्री एंगल, जिसको हम कह सकते हैं अगर प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने यहाँ पर लिया तो हमको 0 डिग्री एंगल यहाँ पर मिलेगा आपको. इज दैट क्लियर. Here we have learned first fact of this line. Now students, what if I keep this point middle of this line? Yes, and now if I keep the protector on this midpoint, here you can see 180 degree on both the side. Right hand side 180 degree and here on left hand side 180 degree. So here we can say that both the side we can see 180 degree. So a protector is a 180 degree and we can draw here a line which is 180 degree. So 0 degree is 180 degree. 0 degree angle is nothing but 180 degree angle. So 180 degree angle means a line. So we can say here a line is also 180 degree angle. जैसे हमने कहा था a line is a 0 degree angle, तो वैसे ही a line is also 180 degree angle. Is that clear? Now students, what if अगर मैं यहाँ पर प्रोटेक्टर मिडल में सेंटर पे रख कर मिड पॉइंट पे देखती हूँ तो यहाँ पर आपको बोथ द साइड 90 डिग्री या 90 डिग्री दिखेगा. दैट मीन्स 180 डिग्री अगेन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री. इज दैट क्लियर. बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर रिड्यूस करती हूँ एंगल, तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्यूट है बट राइट हैंड साइड पे ऑब्ट्यूज एंगल है. तो अब देखो अगर दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमको कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा ना. ठीक है, अगर देखो अभी यहाँ पर मैंने और एंगल कम कर दिया, आप देखते हो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 डिग्री है. ठीक है, अगेन इट फॉर्म अ लाइन. इज दैट क्लियर. अभी देखो 180 डिग्री कैसा है. Yes, here you can see na this orange color 180 degree line. So a line can be a straight angle. Is that clear? Now students, what if अगर हमने यही straight line के साथ और एक straight line यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है, तो अब ये 2 लाइन क्या कहलाएंगी. Yes, you are right, they are parallel line. So let's learn the topic concept of parallel line. Parallel line are those lines which never meet each other. That is why we say is that the 2 lines never meet each other are called parallel line. They never meet each other. In geometry, parallel lines are lines in a plane which do not meet, that is 2 straight lines. Okay, in a plane that do not intersect each other, they are said to be a parallel line. Now students, when a line that pass through these 2 parallel line in the same plane at a distance point, that line is known as a
transversal line. Here you can see this two parallel line, and the standing line is the transversal line. This slanting line is a transversal line. This line passing through this parallel line. Now let's learn vertical opposite angle. Here vertical opposite angle symbol is V. Vertically opposite angle symbol is V. Here you can see this V symbol on this transversal line. Here this blue color is representing the vertically opposite angle symbol. Yes, now these two red color angles are vertically opposite angle. Here angle A is equal to angle A. Now here both these angle are congruent, so we can say that they both are vertically opposite angle. Is that clear? So now as you see here, vertically opposite angle are always equal. If A is equal to 70 degree, that means that A is also equal to 70 degree. See this, they both are obtuse angle. Yes, they both are obtuse angle. See the above part and see here below part. So they both are obtuse angle and they are equal. See here B and now here B. Okay, so the A was a small acute angle and B was a obtuse angle. So they both are equal and they are vertically opposite angle. Is that clear? So the symbol for vertically opposite angle is V. The symbol for vertically opposite angle is V. Remember students this. Okay. Now next angle is C and here C. Again they are vertically opposite angle. See the pink color C, yes, and here sea green color D, and here again sea green color D. They both are also vertically angle. So here how many pairs we can see here? So here 4 pair of angles. Here total 4 pair of angles we can find here. Is that clear? How many pairs of vertically opposite angle and which symbol represent vertically opposite angle? This question I am going to ask you. Be ready for that. Now let's learn pair of alternate angles. Alternate angles are angles that are opposite position related to transversal intersecting two lines. Now here alternate angle symbol is Z. This Z represent alternate angle. Here you can see this two parallel line and one slanting line that is known as a transversal line. See here this red color inside that transversal and parallel line, you can see the Z. This Z symbol represent alternate angle test. Okay, now here if I keep A and here I keep here A, so this A is equal to A. If A is equal to 70 on left hand side, that means the right hand side A is also 70 by alternate angle test. वो एक दूसरे से congruent होंगे. क्यों? क्योंकि वो Z symbol represent कर रहे हैं और वो कैसा टेस्ट है? Alternate angle test है. Similarly on the other side you can see here B. ठीक है, अब आप देखते हो B एंड बिलो एट द सेम टाइम आप वापस से ब्लू कलर का देखते हो B. ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है. अगर B इज इक्वल टू 110 अगर अपर साइड पे है तो डाउनवर्ड साइड पे भी 110 ही होना चाहिए. यस और नो? यस. सो दे आर alternate angles. So here we have learned 2 pair of angles which are alternate. Now your question is, what is alternate angle? How many pair of alternate angle and which symbol represent alternate angle? Now let's study pair of corresponding angle. Here when two lines are crossed by another line, make sure that when two lines are crossed by another line which is called as transversal line, okay, the angle in a matching corner are called corresponding angle and the symbol for corresponding angle is F. Now here you can see this two parallel line which is crossing to this transversal line. Okay, this transversal line is exactly intersecting. So the symbol for corresponding angle is F. Here you can see this F. F symbol represent corresponding angle and always remember A is congruent to this A. Okay, so they are same side, same direction. Corresponding angle always show the same side, same direction. You can see here
If A is equal to 110 degree, that means the downward A is also equal to 110 degree. So they are alternate angle. When two lines are crossed by another line which is called transversal line and the angle is matching corner are corresponding angle. Now here B is on the same position. See the upper part B. So the upper part B is equal to here B. So they both are congruent. Is that clear? So here all the angles are congruent. See the left hand side and see the right hand side. They all are congruent with each other. Same side, same direction. Corresponding angle जो रहते हैं ना वो क्या शो करते हैं आपको पता है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जो भी है उसका इंटीरियर एक्सटीरियर हमेशा ये शो करते हैं कि सेम साइड सेम डायरेक्शंस रहते हैं उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट रहते हैं, इक्वल रहते हैं. अभी जो हमने राइट हैंड साइड पे देखे सेम वैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखोगे तो यहाँ पर सिंबल F रिप्रेजेंट कर रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स को. इज दैट क्लियर? सी हियर द अबो पार्ट जो भी रहेगा सबका सब इक्वल रहेगा. इट इज नॉट मैटर कि कौन सा एंगल कितना बड़ा है. ठीक है, देखो ऊपर जो मिडल में जो C है वही C का जो डिग्री है वही जो यहाँ पर नीचे डाउनवर्ड में दिया है वो दोनों कैसा है? इक्वल है. सी द पर्पल कलर C, अगर C 70 डिग्री है दैट मीन्स द स्मॉलर C इज ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक है, इट डजेंट मैटर कि कौन सा एंगल आपको बड़ा दिख रहा है. एंगल बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, उसकी डिग्री जो है वो सिमिलर होना चाहिए. इफ उनकी डिग्री सिमिलर है दैट मीन्स वो कॉन्ग्रेंट एंगल है. इज दैट क्लियर? नाउ सी दिस ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर इंडिकेट दिस D is equal to D. So this D is equal to D is how much? For example, D is equal to D is 120 degree. ठीक है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है. अभी ये पर्पल सी को मैं रिमूव कर रही हूँ और मैं आपको स्काई ब्लू कलर वाला डी शो कर रही हूँ. तो ये क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रेंट. Okay, so corresponding angle are 4 pair of angles. How many pair? 4 pair of angles are in corresponding angle. Now students, let's learn interior angle. Interior angle. Here interior means inside the angle. Here symbol for interior angle represents C. This C represent interior angle. Here you can see on inside the angle the symbol is C and here 180 degree. Interior angle is 180 degree. Whenever these two parallel line, any of 4 angles form between two straight line are parallel line and intersected by the third straight line. So these are interior angles. See the inside portion, the pink color highlight the interior angle. See on the straight line you can see here 2 angles, angle A and angle B. If we add both these angle we get 180 degree. One is obtuse angle and other one is acute angle. Is that clear? It is not necessary कि वो दोनों एंगल 90-90 हो. 90 plus 90 जरूरी नहीं है. It may possible that कि एक कोई obtuse होगा और सेकेंड वाला acute होगा. Is that clear? और दोनों को ऐड करके हमको 180 डिग्री मिलेगा. तो उस टाइप ऑफ एंगल को हम क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल. और वो हमेशा पैरेलल लाइन के इनसाइड रहेगा. सी हियर ये ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के जो अंदर का हिस्सा है जो पिंक कलर से हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, वो क्या है? वो इंटीरियर एंगल है. यस और नो? नाउ सी हियर एंगल C and angle D. Okay, now this green color angle C and now this green color angle D. If we add both this angle, we get here 180 degree. जो upper वाला angle है वो obtuse है angle C और जो green वाला angle है वो acute angle है. अगर दोनों को add करते हैं तो 180 मिलेगा. That means अगर angle D 70 है तो angle C क्या रहेगा? 110. अगर दोनों को add करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 180 degree. Students, always remember this. Always remember interior angle is 180 degree. Sum of the interior, that is why they says that sum of the interior angle is 180 degree. Is that clear? Now students, let's learn the important concept. Let us check out some important theorem on this interior angle, corresponding angle. Now students, here I am going to teach you very important theorem. Pay attention, it is there in your textbook, page number 16. So are you all ready to learn corresponding angle test? Let's learn corresponding angle theorem. So corresponding angle theorem says that
if a pair of corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines are of equal measures. Now here you can see this two parallel line. Now these blue color lines are the parallel line. They both are parallel with each other. That is why we can say that line L parallel to line M. And this slanting line N is the transversal line. Okay. Now here few angles are given. Angle A, B and C on left hand side. First we will write here given. So what are the given which is there in your question? Line L parallel to line M and line N is the transversal line. This is your given. Now to prove means what we are finding. So we are finding here angle A जो है वो angle B के equal है. Angle A is equal to angle B. Equal measures हमको find करने. Is that clear? Now proof is what? Solution. What we are solving. So here we are solving that two angles are, if we add two angle we get 180 degree. That means angle A को अगर हम angle C से ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 180 डिग्री. देखिए ये लाइन जो N है उस पे टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. कौन से है वो? एंगल A और एंगल C. दैट इज वाई दे आर एंगल इन अ लीनियर पेयर. एंगल A और एंगल C दोनों को ऐड करके आपको 180 डिग्री मिलेगा. Is that clear? Now again we will write line L parallel to line M and line N is the transversal line. Here you can see on this figure line L और line M जो है वो एक दूसरे के parallel है. They are parallel line. And यहाँ पर जो N है वो ट्रांसवर्सल लाइन है. वो उन दोनों लाइन को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. इट इज देयर इन योर क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन आर इक्वल मेजर्स. इज दैट क्लियर? नाउ सी एंगल C और एंगल B जो है वो क्या है? इंटीरियर एंगल है. थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंटीरियर एंगल टेस्ट कराया था. तो ये जो पैरेलल लाइन के इनसाइड एंगल है वो क्या है? इंटीरियर एंगल. इफ आई ऐड बोथ दिस एंगल आई गेट हियर 180 degree. They are interior angle theorem. Is that clear? Angle C plus angle B is equal to 180 degree. They are interior angle. Now students, angle A plus angle C is equal to 180 degree. Angle C plus angle B is equal to 180 degree. Now here we will write angle A plus angle C is equal to angle B plus angle C. From first and second angle in a linear pair और इंटीरियर एंगल थ्योरम से हमको मिल रहा है. इज दैट क्लियर? नाउ ये कॉमन CC जो है ना वो कट कर देंगे हम. ये C गया, इधर से C गया. लेफ्ट हैंड साइड से भी C कट करना है, राइट हैंड साइड से भी C कट करना है. आफ्टर कटिंग C वी गेट विच एंगल? एंगल A एंड एंगल B. दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B विच इज इक्वल मेजर. नाउ स्टूडेंट्स let's learn the other theorem. Here we are going to learn about alternate angle theorem. So here let's learn the new theorem which is known as alternate angle test and alternate angle theorem. So let's learn alternate angle theorem. The theorem says that if a pair of alternate angle formed by a transversal of two parallel line are equal measure. Okay, if a pair of alternate angle formed by a transversal of two parallel line are of equal measure. Now see here line L parallel to line M. Okay, black color line L parallel to line M and this line N is the transversal line. Here you can see angle C, angle B, angle A. They all are alternate angles. So first we will write here given line L parallel to line M and line N is the transversal line. The slanting line is the transversal line. Now here we are proving that to prove angle A is equal to angle C. Angle A is equal to angle C. Now student, can you guess which shape it is? You're right, Z shape. Z symbol represent alternate angle. Now let's prove. Angle A plus angle B is equal to 180 degree. Angle A plus angle B is equal to 180 degree because they are on the same line. Okay, that means angle in a linear pair.
which is in a same line is known as a angle in a linear pair. जो parallel line का line M है ना, उसके ऊपर एंगल A और C है, ठीक है, that is why they are angle in a linear pair, one obtuse, one acute. Now here we will write line L parallel to line M and line N is the transversal line which is there in our given. ये हमने कहाँ से लिखे? given से लिखे हैं. आप देख रहे हो लाइन L फिगर में और लाइन M ये दोनों ही पैरेलल है एक दूसरे के, और यहाँ पर लाइन N जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है. लाइन N is the transversal line. It is indicated in given. Okay, it is there in given. So we will write here line L parallel to line M and line N is transversal line. Now here angle B is equal to angle C. B is equal to angle C is 180 degree. कौन सा थियरम है ये? इंटीरियर एंगल थियरम है. सी पैरेलल लाइन के इनसाइड है, तो इस टाइप के थियरम को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल थियरम. आई हैव टॉट यू. सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऑलवेज रिमेंबर दिस. इज दैट क्लियर? नाउ एंगल ए प्लस बी 180 डिग्री, angle B plus angle C 180 degree. From 1 and 2 we get here angle A plus angle B is equal to angle B plus angle C from 1 and 2. Okay, angle in a linear pair and interior angle test. Now BB get cancelled. After cutting this BB we get angle A and angle C which is equal. So angle A is equal to C. Both these angle are equal, which means that pair of alternate angle formed by a transversal of two parallel line are equal measure. Here you can see this angle A is equal to angle C. Both are equal. Now students, your task is to write this theorem in your notebook. Thank you for watching my video. Enjoy learning. Stay healthy. Stay safe.